बैक टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हमने ससेप्टिबिलिटी डिफाइन कर ली थी, डाया, पैरा एंड पैरो क्यों होते हैं ये मैंने समझा दिया था भाई। एंड relative permeability हमने डिफाइन कर ली थी in terms of susceptibility which is 1 plus chi. You can call it x also, doesn't matter. जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है किसी भी मटेरियल का, this is susceptibility multiplied by magnetizing intensity which is called H. यहाँ तक लास्ट क्लास में पहुंच गए थे। ये सब नोट हो गया था लास्ट क्लास में। नाउ राइट डाउन डायमैग्नेटिक मटेरियल्स और डायमैग्नेटिज्म। मैंने डायमैग्नेटिक और के कुछ पॉइंट्स नोट कराए थे क्या? नहीं, केवल समझाया था। राइट डाउन दीस थिंग्स। In diamagnetic materials, all the electrons are paired. All the electrons are paired. That is, individual atoms have no magnetic moment. Individual atoms have no magnetic moment. इसका लॉजिक समझा दिया था। पेयर्ड है, अगर एक का मैग्नेटिक मोमेंट प्लस है तो दूसरे का क्या होगा? माइनस। तो इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। एंड ओवरऑल मैग्नेटाइजेशन in the absence of external magnetic field. Overall magnetization in the absence of external magnetic field is always 0. What is magnetization? N. What is magnetization? Magnetic moment per unit volume. Individual atom के पास नहीं है, पूरे सैंपल के पास भी नहीं होगा। When a diamagnetic material is placed in external magnetic field, magnetic moments in the direction of external field, क्या बोलना चाहिए मुझे? Increases or decreases? Lenz's law decreases. भाई एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन वाला जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका फ्लक्स बढ़ जाएगा तो वो सही क्या करने की कोशिश करेगा? अपोज करने के लिए अपनी ऑर्बिटल वेलोसिटी को क्या कर देगा? डिक्रीज, एंड देयरफॉर उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। इस तरह से दिखाया था मैंने, ये दो मैग्नेटिक मोमेंट है, फिर आपने एक एक्सटर्नल फील्ड लगाया तो ये ऐसा हो जाएगा।
ऐसे ही बताया था मैंने लास्ट क्लास में। कंप्लीट सेंटेंस क्या बोला मैंने? The direction of external magnetic field decreases. You know, गलत बोल दिया। When a diamagnetic material is placed in an external magnetic field, magnetic moments in the direction of external field decrease. Magnetic moments in the direction of external magnetic field decrease, and those opposite to it increase. Thus, producing a net magnetic moment, thus producing a net magnetic moment opposite to the direction of external field, thus producing a magnetic moment which is opposite to the external magnetic field. अब ये एरो वाला पार्ट भी बना लो इस तरह से. This is V external and this is after and this is before. When there is no external field, both are equal. Once you introduce an external field, that's what happens. This is before they both are equal. These are the paired electrons. External field की डायरेक्शन में डिक्रीज हो गया and opposite increase हो गया because of Lenz's law. Now continue with that statement. Because of this, diamagnetic materials are repelled inside the bracket weakly. बहुत powerful effect नहीं है. Diamagnetic materials are repelled weakly in an external field. They have a tendency to move. They have a tendency to move from higher magnetic field region to lower magnetic field region. They have a tendency to move from high magnetic field region to a low magnetic field region. As M vector लगा लेना. As M is opposite to H. As N means magnetization, total magnetic moment, and H is that magnetizing intensity. As M is opposite to H, susceptibility chi is negative. Susceptibility of diamagnetic materials chi is negative.
Examples are bismuth, copper, water, etc. These things will feel repaired in the presence of what? External magnetic field. We also represent the whole thing in terms of magnetic field lines. Magnetic field lines में क्या होता है देखना कि अगर आपने एक डायमैग्नेटिक मटेरियल यूज किया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं we try to avoid this. एक तरह से बाईपास कर देते हैं बहुत कम लाइन से जो अंदर जाता है थोड़ी देर बाद पैरा बनाएंगे तो ये लाइन अंदर की तरफ जाना शुरू कर देंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल बेसिकली क्या करना चाह रहा है इट्स ट्राइंग टू रिपेल ऑल दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे कि अंदर हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाए कम हो जाए बिकॉज ऑफ दीज टू बीइंग ऑपोजिट टू ईच अदर draw this magnetic field line structure the material is diamagnetic जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं जैसे बिस्मथ कॉपर इनकी जब हम बात करें natural state में they are diamagnetic. If you make a superconductor is something whose resistance is zero. ये जो superconductors होते हैं ये you have to decrease the temperature vigorously -200 and all -150 पर भी मिलने लगा है -40 तक आ गए लोग basically. The point is कि बहुत low temperature पर when you have a superconductor what they found is that no lines are present inside. What's the value of susceptibility? If there are no field lines present inside, then total field inside will be what? How to make this thing zero? Susceptibility क्या कर दो? Minus. A simple short answer question for school board JNB. What is the susceptibility of superconductors? Zero. What is the magnetic field inside a superconductor? Zero. How many lines do you see inside? Zero. What is relative permeability of a superconductor? Zero. Susceptibility कितनी है? -1. Write down this. For superconductors, susceptibility is -1. Relative permeability is 0. Relative permeability is 0. And no magnetic field is present inside. And no magnetic field is present inside. And they are very strongly repelled by the external magnetic field. And they are very strongly repelled by the external magnetic field. Maglev का नाम सुना है maglev? These are the trains. Initially they run on wheels. Once they gain momentum, they use superconductors, superconducting behavior and all. So what it does, it creates a repulsive effect. That train, instead of moving on rails, simply lifts up and kind of glides.
Once it glides, you have reduced a lot of friction, and then magnetic field simply is pushing that train. North, south, north, south, north, south. You train, you rails in. They behave like alternating a magnet which is produced by alternating current. North, south, north, south, north, south. ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ बना है, थोड़ा सा आगे गया, ये वाला ऐसा नॉर्थ बनेगा, ये नॉर्थ, ये ट्रेन को क्या करता चला जाता है, पुश, सेम टाइम ये लिफ्ट हो गया है बिकॉज ऑफ सुपर कंडक्टर्स, इसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, जो परमेबिलिटी है वो जीरो हो गया है, नो फील्ड लाइन शुड एंटर इनसाइड, नो फील्ड लाइन शुड एंटर इनसाइड मींस जो आपका लैंजेस लॉ है वो खतरनाक फॉर्म में ही काम कर रहा है, उसने उसको अच्छे से क्या किया हुआ है, लिफ्ट किया हुआ है. We have reduced friction and all. Maglev trains and all, they work on the principle of magnetism shown by superconductors. So, बता दिया. Now write down paramagnetism. Paramagnetism is shown by materials which have unpaired electrons. Paramagnetism is shown by materials which have unpaired electrons. That is, individual atom has its own magnetic moment. Individual atom has its own magnetic moment, but due to thermal collisions and all, net magnetic moment of the sample is zero. Net magnetic moment of the sample is zero. फिर से सुनना है, डायमैग्नेटिक मटेरियल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इंडिविजुअल एटम के पास ही नहीं है, प्लस भी है माइनस भी है, खत्म हो गया उसका. लेकिन जब हम पैरा की बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल एटम के पास है, लेकिन एक एटम का इधर है, किसी का इधर है, थर्मल कोलिजन्स हो रहे हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है. If you take a very large sample, you will find that that large sample has no net magnetic moment. Diamagnetism में भी no net magnetic moment था, मैग्नेटाइजेशन जीरो था, यहाँ भी है जीरो, लेकिन इंडिविजुअल सैंपल एटम के पास यहाँ पर प्रेजेंट है. When these materials are placed in external magnetic field, when these materials are placed in external magnetic field, these individual magnetic moments try to align themselves in the direction of external field. Try to align themselves in the direction of external magnetic field, thus producing a net magnetic moment. In the direction of external field.
पॉइंट वाइज नोट कर लो इस बार एम और एच का डायरेक्शन क्या हो गया रे सेम इसका मतलब ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगी पॉजिटिव पॉइंट वाइज नोट कर लो एंड सिंस एम एंड एच आर इन द सेम डायरेक्शन susceptibility is positive since M and H are in the same direction susceptibility is positive permeability is greater than 1 permeability is greater than 1 और डायमैग्नेटिक में अगर जगह तो नोट कर लेना और डायमैग्नेटिक में तुम्हारी परमेबिलिटी क्या रहेगी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 0 कब हो जाएगी सुपर कंडक्टर के केस डायमैग्नेटिक में परमेबिलिटी वाला पॉइंट शायद नोट नहीं करा हालांकि लिखा हुआ है इसके अंदर कुछ डायमैग्नेटिक mu r is less than 1 and greater than 0 जीरो हो जाएगा सुपर कंडक्टर्स के लिए पैरा के साथ नेक्स्ट पॉइंट नोट कर रहे हैं जैसे आप डाया को आप क्या कर रहे थे हाई स्ट्रेंथ फील्ड से कहां शिफ्ट होना पड़ता है इनको लो बिकॉज़ दे फील प्रिवेल्ड यहां क्या हो रहा है उल्टा they are attracted by the external field and therefore they move from low to high. Write down this. Paramagnetic materials feel attracted paramagnetic materials feel attracted because of external field. Again, it's a very weak attraction. They have a tendency to move from low magnetic strength to high magnetic strength. They have a tendency to move from low magnetic strength to high magnetic strength. And in an external magnetic field, magnetic flux density inside a paramagnetic material increases. Draw this figure. ये रिपेल कर रहा था ये अट्रैक्ट कर रहा है फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ने का सिंपल सा लॉजिक है रटने की जरूरत नहीं है पहले इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट सब कैंसिल थे और वो सब अलाइन होते चले जा रहे हैं जैसे जैसे अलाइन होते जाएंगे अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा तो अंदर फील्ड बढ़ जाएगा मतलब बाहर तो फील्ड है ही लेकिन अंदर बाहर का भी फील्ड है और खुद का फील्ड भी है फील्ड स्ट्रेंथ therefore is increasing. Examples are aluminum, sodium, oxygen, etc. आपका होमवर्क है एग्जांपल्स की लिस्ट बनाना कहीं से भी नेट से देख के कुछ क्योंकि जेई नीट में इस तरह के स्पेशली नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आई एम नॉट सपोज्ड टू रिमेंबर लिस्ट ऑफ ऑल दोस मटेरियल्स कॉन्सेप्ट ही पता है अपने को बिकॉज़ उसको रटना नहीं पड़ता समझना पड़ता है रटने की चीज अपने से नहीं होती दो तीन अपने को याद है क्योंकि थोड़ा बहुत अपन एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं प्रॉपर से मैंने आपको दिखाया था एक नियोडिमियम मैग्नेट कॉपर किस तरह का मटेरियल है डायमैग्नेटिक उस कॉपर में जब मैंने मैग्नेट को ड्रॉ किया था वो इफेक्ट चल रहे थे एक तो डायरेक्ट एडी करंट की वजह से उसको रिपल्शन फील हो रहा था अदर देन दैट कॉपर
उस मैग्नेट को क्या करने की कोशिश कर रही थी, रिपेल, क्योंकि कॉपर किस तरह का मटेरियल है, डायमैग्नेटिक। अगर मैं उस कॉपर की जगह एल्यूमिनियम की मैं एक बार ले लूं, सिलेंडर, उसमें एक होल कर दूं, वो भी है मेरे पास, उसमें अगर आप ड्रॉप करते हो उस बार मैग्नेट को, अगेन इट स्लोज डाउन। व्हाई? क्योंकि डाया और पैरा बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं है। कैसे हैं? वेरी वीक। वेरी वीक का मतलब फील करा दे रहा हूं। हर आदमी ने एल्यूमिनियम देखा है लाइफ में, मैग्नेट देखी है, कभी एल्यूमिनियम को मैग्नेट से चिपका पाएगा? नहीं। मैंने क्या लिखा है? एल्यूमिनियम कैसा मटेरियल है? पैरा। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या आप फील करते हैं? अट्रैक्शन। कभी आप चिपका पाए? नहीं। क्योंकि कैसा इफेक्ट है वो? वेरी वीक इफेक्ट। तो वीक होने की वजह से इफेक्टिवली when that bar, that neodymium magnet falls through a hole inside a aluminum cylinder, again it feels what? Eddy currents, Lange's law overall. It slows down because of that. क्योंकि इफेक्ट बहुत वीक है। Right on ferromagnetism. Right on ferromagnetism fast. For ferromagnetic materials, in ferromagnetic materials, there are domains of atoms having magnetic moments in same direction. There are domains of atoms. Domain means small areas are there, patches type की बन जाते हैं अंदर. There are domains of atoms having magnetic moments in same direction. At normal temperature, all these domains cancel out overall magnetic field. Overall magnetic moment. और magnetic moment से magnetic field हो जाता है. But in the presence of an external field, all the domains align themselves in the direction of external field, thus producing a very large overall magnetic moment. मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ गया तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब इस तरह के मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन एकदम क्या हो जाएगा? ज्यादा। पास समझाने की कोशिश करता हूँ, टाइम कम है, सुनना। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? पैरामैग्नेटिक का मतलब कि एक बहुत बड़ा क्राउड है, उस क्राउड में बहुत शोर टाइप क्या हो रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अलाइन ऑल ऑफ देम टू लिसन टू यू। You have to use the loudspeaker कि भाई सुन लो हमारी कहानी क्या बोल रहे हैं, तब वो आपकी तरफ देखेंगे एंड पता नहीं तभी कितने देखेंगे। That's what is happening with paramagnetic material. Now, ferromagnetism is kind of a class 2. यहाँ पर क्लस्टर्स बने हुए हैं।
सारे के सारे आप सारे के सारे इधर देख रहे हो। एक और क्लासरूम है मान लो बगल में, उधर पॉइंट कर रहा होगा। सपोज मैं एंटर करूंगा एक्सटर्नल फील्ड, and if I say something, if you all are interested, you are, because you are ferromagnetic material, हर आदमी सुनने के लिए मेरी तरफ देखेगा। In this case अलाइनमेंट करना इजी है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे हिस्सों में पहले से ही वो क्या हो चुका है, अलाइनमेंट हो चुका है। ये अलाइनमेंट अलग अलग थे, अब जैसी मैग्नेटिक फील्ड आया इधर आ गया, और स्ट्रेंथ बढ़ाओगे ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाएगा। क्या यू सी एक लिमिट के बाद आप बढ़ाओगे तो कुछ नहीं होगा, एक लिमिट के बाद सारे के सारे डोमेन जब एक ही डायरेक्शन में आ गए उससे ज्यादा तो आप कर ही नहीं सकते हो। बहुत ज्यादा फील्ड बढ़ाओगे एक्सटर्नल तो एक सैचुरेशन लेवल पे क्रिएट हो जाता है। फाइंड आउट दिस पॉइंट, बट आफ्टर अ पर्टिकुलर strength of external field, but after a particular strength of magnetic field, further alignment is not possible. Magnetization reaches its maximum value. Magnetization reaches its maximum value. Inside the bracket, saturation takes place. Susceptibility for ferromagnetic materials is very high. Susceptibility of ferromagnetic materials is very high. पैरा में हम 1 और 2 की बात करते हैं, 100,000 की बात करते हैं यहाँ पर। Susceptibility is very high. Similarly, mu permeability, relative permeability is also very large. बिल्कुल लॉजिकल है भाई, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या फील करेंगे, अट्रैक्टेड, they feel attracted to the presence of external field, they feel attracted, they feel highly attracted in the presence of external field. जो आयरन है, स्टील है, these are the examples of what? Ferromagnetic materials. Examples of steel, iron. बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है लोडस्टोन। लोडस्टोन क्या होता था, बिल्कुल स्टार्टिंग में जिससे मैग्नेटिक नीडल बनती थी, सिर्फ पहला मैग्नेटिक जो नेचर लोगों ने देखा, वो जो जिस पत्थर को नेचर में जो मिलता है, that was lodestone. From that, all these things they have a very high permeability and all. इस permeability के बेस पर जो ferromagnetic material and all इनके क्या uses हैं and all, उसको हम next class में करेंगे कि soft iron, hard iron and all। अपने electromagnet सुनी होगी, सोलेनॉइड जो हम यूज करते हैं उसके अंदर क्या कोर डालनी है, एक स्टैटिस्टिक्स कर्व हुआ करता है। 15-20 मिनट्स की कहानी और बची हुई है, एंड देन नेक्स्ट क्लास में अपन लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शुरू करेंगे। मिस मत करना नेक्स्ट क्लास।